गाइस, सो मुझे ऐसे बड़े बड़े दुपट्टास बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं एंड आई थिंक आप सॉरी बड़ा है ना तो गिर गया, सॉरी लेट्स स्टार्ट अगेन। सो मुझे ऐसे बड़े बड़े दुपट्टास बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आई थिंक दे लुक सो ग्रेसफुल एंड इट रियली एड्स टू द सॉरी आई वाज सेइंग इट रियली एड्स टू द आउटफिट। एंड इतने बड़े दुपट्टे को हम बहुत तरीके से ड्रेप कर सकते हैं, बट ये मेरे साथ क्या हो रहा है अभी, इट्स गेटिंग क्लम्जी राइट। सो यही तो प्रॉब्लम है इन बड़ा दुपट्टास के साथ। आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स नॉट ड्रेपिंग दीज दुपट्टास, वो ऐसे दुपट्टास को ड्रेप ही नहीं करती हैं बिकॉज उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। एंड कोई तो वे होगा इसको सॉल्व करने का, है ना, बिकॉज आई थिंक दे लुक ब्यूटिफुल इजंट इट। सो ऐसे शोल्डर पे बार बार एज को एडजस्ट करना, यू नो, लाइक टॉकिंग ऑन समवन, we don't want to look like this, right? What you're seeing me right now. So there has to be a solution. So basically I've come up with not 1, not 5, not 10, not 15, but actually 16 ways of draping this dupatta. अब इसे लहंगा में भी ट्राई कर सकते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है. So you'll learn a lot from this video. I promise. Watch this till the end and now let's begin. And हाँ, एक और बात बोलनी थी. You watching this video right now, you're beautiful. So now let's get started. Now starting with look 1, which is no surprise, but इसमें क्या करना है आपने, you make sure कि आप अपने दुपट्टे को इस तरह से लें and make sure आपका border visible हो and it is also equal on both sides, तभी ये सबसे अच्छा लगेगा. And then of course your best friend is your safety pin here, so make sure आप इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करके इसे शोल्डर पे अच्छे से पिन करें, थोड़ा पीछे को, राइट. एंड ये बहुत कंफर्टेबल रहता है. आई टेक माई दुपट्टा मोस्टली लाइक दिस एंड बहुत ही प्यारा लगता है. एवरी एज ग्रुप कैन वेयर दिस. मेच्योर वुमेन पे अच्छा लगेगा, यंग गर्ल्स पे अच्छा लगेगा. एंड बेसिकली नाउ इट इज सिक्योर एंड एज यू कैन सी आई एम टेंशन फ्री, राइट. तो अगर मैं बेंड करती हूँ इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल बिकॉज माई सेफ्टी पिन्स आर मेकिंग इट सिक्योर एंड इट इज़ सो ग्रेसफुल. यू नो, यू कैन कैरी इट, यू कैन शो ऑफ योर बैक हियर. आपका नेक हाँ थोड़ा कवर हो जाएगा बट इसमें आप बहुत स्लिम लगेंगे बिकॉज योर लोअर बॉर्डर इज कम अराउंड योर वेस्ट. अब रिसेंटली कैटरीना कैफ ने भी विकी कौशल के साथ जो एक अपीयरेंस किया था आफ्टर मैरिज, शी लुक्ड अमेजिंग बाय द वे एंड उसने अपना दुपट्टा ऐसे कैरी किया था. सो आई लव्ड इट एंड इसे तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, स्पेशली आप जब जल्दी में हो. सो द नेक्स्ट लुक नाउ, इसी का एक अपग्रेडेशन है. जब आपने ऐसे पिन कर रखा हो, अपने बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करते करते ऊपर को ले आओ एंड देयर यू हैव इट. Just another look of the dupatta. Now your border will show beautifully and here now if you really want to show your neck, if you want to show your suit, you will do that and it is going to look like a small dupatta. अगर आपको बड़ा दुपट्टा नहीं लेना है, this is the look you should go for. And आप इसे पिन भी कर सकते हैं. मेरा दुपट्टा हैवी था तो मुझे पिन करने का नीड नहीं फील हो रहा था, but you can pin it and it looks amazing. Especially I think young girls इसे बहुत अच्छे से कैरी करेंगी. So there you have it. Now the third look, again an upgradation. So basically आपको फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना है. So just एक साइड से अपना दुपट्टा इस तरह से ड्रॉप कर दो and it looks very beautiful. Now make sure you pin it on one side ताकि ये इसी तरह से रहे. ना आपका एक हैंड फ्री रहेगा. मैंने अपना राइट हैंड फ्री रखा है. So अगर आपने कुछ काम करना है आपका एक हैंड फ्री रहेगा and एक साइड से आप फॉलिंग दुपट्टा शो कर सकते हैं. So basically आप अपना सूट भी शो कर सकते हैं, दुपट्टा भी. This is basically best of both. Now this is the fourth style and I think ये बहुत ही modern take है दुपट्टा पे. You can drape your दुपट्टा like this. एक falling neck appearance आता है and it's very important to pin your दुपट्टा on both sides and once pinned it is going to be secure. So as you can see I'm pinning it on one side and obviously I've pinned it on the other side as well. उसके बाद ये बिल्कुल secure हो रहा था and it looks amazing. Especially अगर आप अपना neck highlight करना चाहते हैं and it also gives like a beautiful V appearance but आपका suit इसमें ज़्यादा हाइड नहीं होगा. So you can show off your suit, you can show off your dupatta and I think it's a very modern take on the dupatta which is absolutely gorgeous. So moving on to the next look. Now अगर हम सूट की बात करें और पंजाबी कुड़ी वाइब्स ना आए तो मज़ा नहीं आएगा ना. So अपने इस बॉर्डर को इस तरह से वी शेप में आप नीचे ड्रैग करेंगे एंड जस्ट मेक श्योर कि आपके चारों तरह से बॉर्डर्स विजिबल हो, मतलब अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, लाइक दिस. एंड देन ऑफ कोर्स यू पिन इट एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. इट लुक्स अमेजिंग. अगेन यू कैन शो ऑफ योर दुपट्टा. द प्लीट्स विल फॉल नाइसली. इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी ग्रेसफुल, ब्यूटिफुल, अमेजिंग एंड यू लव दिस. Now the next look is very simple and basically आपने क्या करना है, अपने दुपट्टे को प्लीट करना है जैसे हम साड़ी को प्लीट करते हैं एंड अपने शोल्डर पे सिंपली हैंग कर देना है. दिस इज़ वेयर आप अपने दुपट्टे को बहुत कम दिखाना चाहते हैं. जस्ट वांट टू शो द बॉर्डर एंड योर होल सूट एंड दिस इज़ गोइंग टू लुक वेरी वेरी ग्रेसफुल.
Now the next look, and I've actually lost count here guys, but basically just take a belt and cinch in on your dupatta. It looks amazing, stylish लगता है. आप अपनी waist को highlight कर सकते हो. आपका सूट दुपट्टा दोनों visible होंगे. बहुत ही modern style है, which looks amazing on everyone, and I'm sure you're gonna love this. And make sure you try this one out. So here comes the next look, which is again for someone who likes a cape style. So just drop one of your borders from the dupatta, and ये cape style appearance देगा, but only from one side. So you can cover one of your arms and show off the other arm. Again very very stylish. इसे हर कोई carry कर सकता है, and बहुत ही effortless है and very elegant at the same time. So here in the next look, our pleating skills are going to be very handy. So just make sure you pleat your dupatta nicely again, and इसे अपने shoulder पे इस तरह से रखना है, so that you know you're carrying a muffler or something. I don't know how to explain that, but basically as you can see, and make sure your borders are again coming in the front, because ये ही आपकी body को shape देंगे, and just cinch it with the belt. That's it. And ladies, this is a very smart way of looking slimmer, and even if you're generous breasted, you will love this. I've also done this style previously last year. If you remember this video of the black crop top, I took my dupatta like this, and basically आप इसमें dance कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं. So free, and it looks very stylish. You will definitely stand out if you carry your dupatta like this, and it is also going to keep you warm. Now the next style, you're going to love this. I love this. Is my absolute favorite. So just take your borders like this, इनको carefully pull करना है, and जब आप उनको थोड़ा सा pull कर लो, just drop it on your back and shoulder like this. As you can see, I know I'm taking a lot of time while doing this, but the end result is beautiful, isn't it? It looks like a cape. It will keep you warm, it will keep you covered. Winters aa gayi hai, you will love this style. You can of course adjust your borders like I'm doing here, and basically इसमें मैंने कहीं भी pin नहीं किया है, so your belt is going to hold it up, and look how gorgeous that looks. इसमें आपका सूट थोड़ा हाइड हो जाएगा, I know, but it's time to show off that gorgeous dupatta and dance the night out with this look, because this is my favorite. Alright, the next look, which is again something you might not have seen. Okay, so just drape your dupatta like this, and take one of the border and bring it onto your waist on the other side, and just belt it up. Like you can see, एक side से cape आएगा और एक side से आपका दुपट्टा इस तरह से drape करते आएगा. And this is again for women who want to look slimmer, and इसमें आपका दुपट्टा borders are going to look very graceful from the back, and from the front you have a different look going on. The next look here, basically I have draped my dupatta like a sari. I mean, that sari look is so gorgeous. So make sure you're draping your dupatta on your left shoulder like this, and just cinch it with the belt. And इसमें आप अपना suit थोड़ा hide करेंगे, and you'll show off your gorgeous dupatta. Just make sure your borders are placed nicely, and ऊपर से तो it looks like a beautiful sari only, right? So this is something very elegant, and you will definitely stand out, right? So this is for you, my dear fashionista. You should try this one out. Now साड़ी से inspired होते हुए I've tried something different, wherein I'm just going to take the borders both on one side. इसमें दोनों borders इस तरह से आपके right side of the waist से left shoulder पे जाएंगे, just like a sari. And then of course our favorite accessory, which is the belt, we're going to cinch it, and this is again going to look gorgeous. इसमें हो सकता है आपको एक side से pin करना पड़े, but the belt is also going to hold up very nicely. This is again going to make you stand out. And ये कैसा look है जो comfortable भी है, आप इसमें साड़ी style भी achieve करते हैं, and you also make sure कि आपके सूट पे अगर थोड़ा work है, you want it to be visible, तो वो भी visible होगा. बहुत ही modern है, and definitely gonna make heads turn with this one. So here comes the next look. Now just drape your dupatta like this, and एक side से border लेके you're gonna bring it on your left waist, the corner, and you're gonna basically tuck it into your salwar, right? I'm demonstrating it here like that. So just tuck it nicely. If you want, you can pin it. अगर आपको दुपट्टा heavy है तो I think आपको pin करना चाहिए. And ऊपर से you can just drape your दुपट्टा like a sari and pin it. And इसमें कोई belt नहीं आएगी, आप add कर सकते हैं. But I think this is so graceful. Like look at that, how the दुपट्टा is beautifully falling from the back also. And ये बहुत ही एक different style है. Again, you're gonna make heads turn. Sari style भी है, but you also show your दुपट्टा. And this style is definitely for someone who wants to experiment and not drape their dupatta the usual way. So try it out. So the next style is also quite edgy. You basically pleat your dupatta like this, और इसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे इस तरह से रख लो, एंड थोड़ा सा नीचे को लाना ताकि अच्छा लगेगा. एंड देन ऑफ कोर्स टेक योर बॉर्डर फ्रॉम द अदर साइड, एंड इसे अपने
राइट ऑफ द वेस्ट में आपने इस तरह से टक करना है सलवार में, एंड जस्ट मेक श्योर यू एडजस्ट योर शर्ट सो दैट इट लुक्स नाइस एंड उसका फॉल अच्छा है. एंड अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ ड्रेपिंग योर दुपट्टा. दिस स्टाइल शोज ऑफ योर नेक, इट शोज ऑफ योर सूट, योर ब्यूटिफुल दुपट्टा. तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना इफ़ यू वॉन्ट to achieve something like this. So here comes the next style, which I like to call is the twist. So basically you are going to twist your dupatta like this and simply drape it on your neck. Now this twisted form looks very different. If you want to try something edgy, it will show off whole of your suit, and इसमें आपको पिन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप पिन नहीं करना चाहते, you can try something like this. काफ़ी edgy लगता है, different लगता है, and this is for someone who wants to experiment with their dupatta. So that's it guys. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 16 लुक्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा. एंड कमेंट से याद आया, दिस वीक्स शाउट आउट गोज टू हीना टंडन. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल. एंड अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीक वीडियो में आपको शाउट आउट मिले, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो विद द हैशटैग Ragini Daman. Now it's time to like this video. Make sure you comment down below, subscribe to my channel, and stay tuned for the upcoming videos. Also follow me on my social media. The links are in the description box, and watch these videos that are appearing on your screen right now. And remember that you are beautiful. I love you guys. Bye bye.